जय भीम नमो बुद्धाय अरविंद भैया जी, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ भैया, आप बताओ आप कैसे हो? खाना पीना हुआ भैया आपका? भारती बताएं, आपकी तबीयत खराब थी? हाँ भैया, तबीयत खराब है। तबीयत खराब है भैया। आप बताओ आप सब कैसे हो? आकाश, आप कुछ सुधार हो? सुधार 100 में से 15% सुधार हुआ है। और अभी तो बढ़ा दिया, 2 महीने बाद फिर अब चेकअप के लिए बुलाया है। देखते हैं भैया क्या होता है, बस आप सभी भाइयों का आशीर्वाद है। और ऐसे रहा तो शायद तो ठीक हो जाएंगे। मैं ठीक हूँ बहनी। ओके भैया, ठीक ही रहना चाहिए, सब लोग ठीक रहें। टाइम लगेगा बड़े भैया जी। जब दिक्कत हो जाती है ज़्यादा ना तो फिर उसमें समय लगता है। भारती की भी तबीयत खराब। हाँ भैया, भारती भाई की भी तबीयत खराब है, जुकाम बुखार उनको भी है। उनकी भी तबीयत खराब है। लेकिन भाई हमेशा पूछते रहते हैं, दीदी तबीयत कैसी है, कहाँ हो अभी। सबका खबर लेते हैं। क्या करें भैया, हम तो काफी परेशान चल रहे हैं। हमारा पता नहीं क्या होगा। जुकाम बुखार इंसान को होता है, चलो कुछ दिन में थोड़ा सही हो जाता है। हम तो दवाई खा खा के थक गए हैं भैया। अभी इंस्टा से उनसे बात हुई, आपके बारे में भी बता रहे थे। हाँ भैया, मेरी भी पूछते रहते हैं तबीयत कैसी है दीदी। शिव राम रविदास, जय भीम नमो बुद्धाय दीदी।
जय भीम नमो बुधाय बड़े भैया जी, मोस्ट वेलकम आपका। कैसे हो भैया? कैसे हैं भैया जी आप? तबीयत कैसी है दीदी? ठीक है भैया, मेरी तबीयत पहले से काफ़ी ठीक है। आप लोग बताइए, आप लोग कैसे हैं? खाना पीना हुआ? थैंक यू बड़े भैया जी, थैंक यू। भैया आप सो जाओ, अरविंद भैया। आपको जॉब करनी, सुबह जाना पड़ता ड्यूटी ना, सो जाओ। मेरे बच्चों का कल स्कूल ऑफ है, नींद नहीं आ रही थी, तो मैंने सोचा बस ऐसे चला लेती हूँ कुछ टाइम तक। बढ़िया दीदी, और आपका तबीयत कैसा दीदी? मेरी तबीयत ठीक है भैया, फ़िलहाल इस टाइम थोड़ा सही है। आप बताइए, आपके घर परिवार में सब लोग कैसे हैं भैया? हे भगवान, आपके हाथ हैं, आगे हाथ जोड़ता हूँ। बुद्ध भगवान मेरी बहन को जल्द से जल्द ठीक कर दें। जो भी मेरी खुशी मेरी बहन को दे दें, और जो उसकी दुख हो वह मुझे हो जाए, पर मेरी बहन को जल्द से जल्द ठीक कर दो बुद्ध भगवान। नहीं मेरे भैया, ऐसा मत बोलो। इस बहन की ज़िंदगी वो किस काम की, जब भाई सुखी न रहे, बहन सुखी रह के क्या करेगी बताओ। ऐसा ना बोला करिए आप लोग। बस अपना प्यार दुलार ऐसे दीजिए, अपना आशीर्वाद, आप सबका आशीर्वाद ही बहुत काफ़ी है भैया। बस ला लो। नींद काहे नहीं आ रही बेटा? हैं? पंखा मत चलाना बेटा, मुझे नुकसान करेगा। पंखा बिल्कुल मत चलाना आकाश। बिल्कुल सब बढ़िया दीदी, बुद्ध भगवान की दुआ से सब सही है घर में। ओके भैया, सही रहना चाहिए, सब लोग जहाँ रहे सब ठीक रहे। बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद भैया जी। सो जाओ भैया आप, मैं यही कहूँगी आपको। आप सुबह से ही सबका सपोर्ट कर रहे हैं, मैं देख रही हूँ। मैं भी तो लाइव में कमेंट नहीं करी, जब तक वहाँ फ्री थोड़ी सी बैठी थी तो देखी थी लाइव। बहन तो बहन होती है, छोट दीदी आपको बहन बोलो तो इतना तो कर ही सकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। भाई बनने भाई बनने का फायदा क्या, कर जब बहन का पता ना बेटा, लाइव बंद हो जाती है सबके। कुछ नहीं है, ऐसे रहेगा, सही रहेगा। आप सभी भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता है जिंदगी जीने का साहस मिलता है आप सबका, बस ये प्यार देखकर।
सांस लेने में दिक्कत हो रही बेटा, तभी तो नींद नहीं आ रही ना। पंखा बंद कर दो बाबू, बात मानो, मुझे बहुत नुकसान करेगा। बुखार से मुझे उस तरीके से रह रहा कि बेचैनी हो रही है। ओ नो, अरे नहीं भैया सो जाओ, अरविंद भैया सो जाओ आप। दीदी थोड़ा सेफ्टी भी रखिए, क्योंकि इस समय ना थोड़ा मौसम भी चेंज हो रहा है, तो उससे थोड़ा सावधानी रखिए। भैया आपकी बात तो सही है, पर प्रॉब्लम भैया कुछ दूसरी है, हमें माइंड से प्रॉब्लम है। शिवराम भैया थोड़ा सा प्रॉब्लम ना कुछ अलग है, इसलिए परेशान हूँ। मैं सो रहा हूँ ऑन करके। सो जाओ बड़े भैया जी, मैं तो बोल रही हूँ आप सो जाओ, मुझे नींद नहीं आ रही है, नींद मैं भी सो गई होती, जैसे ना मुझे घबराहट सी हो रही है, इसलिए दिक्कत हो रही है। भाई बनने का फ़ायदा क्या, कर बहन के लिए दुआ भी न करो तो मैं किस चीज़ का हुआ मेरी बहन, कि हमेशा तुम खुश रहना। दिल से बहुत बहुत धन्यवाद भैया, बड़े भैया जी, बहुत बहुत धन्यवाद दिल से आप सभी लोगों को। ज़िंदगी में क्या है, बस यही है, एक दूसरे का प्यार, स्नेह, सच्ची भावना, एक दूसरे का सम्मान, यही है, बाकी कुछ नहीं है भैया। ज़्यादा सोचा मत करो आप। सोचा नहीं भैया, बताओ ना, मैं कुछ खाई नहीं ना सुबह से, सिर में हो रहा है, तभी नींद नहीं आ रही है। अब मुझे ना अकेले ऐसे और बेचैनी सो रही थी। ये तो मेरा बेटा अभी उठा है, ये भी सो गया था। ये उठ के पंखा चालू कर रहा, मुझे ठंड लग रही, मना कर रही, नहीं मान रहा। जय भीम नमो बुद्धाय, जय भीम नमो बुद्धाय सोनू भैया जी। क्यों नहीं खाए फिर, इतनी टाइम खाई ना, सुबह से नहीं खाई थी। अरुण गौतम भैया जय भीम नमो बुद्धाय, स्वागत है आपका भैया। कैसे हो बड़े भैया जी, थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ सोनू भैया, ठीक हूँ, थोड़ी सी बीपी की प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए नींद नहीं आ रही है। आकाश मान नहीं रहा, पंखा चालू कर रहा बार बार, मुझे ठंड लग रही है। हाँ बेटा बेशक सो ले, पंखा नुकसान करेगा, मत चला। मेरे घर में भी बहन, 3 बहनें, इसलिए मैं सभी को अपनी बहन के नज़र से देखता हूँ। बिल्कुल भैया बिल्कुल, एक दूसरे को सम्मान से ही सम्मान मिलता है। अगर किसी को कद्र, हम किसी का सम्मान करेंगे तो कोई सामने वाला भी हमारा करेगा। अगर हम किसी को जिस नज़रिए से देखेंगे ना, वैसे इंसान हमको भी देखेगा। खा लेना चाहिए था ना वहाँ पर। अरे भैया, सोनू भैया, आप तो बोल रहे हो ना, सांस घुट जाती है, भीड़ इतनी होती है। रजत शर्मा, स्वागत है भैया आपका। सांस घुट जाती है सोनू भैया, पर क्या करें, मजबूरी है। आप काहे नहीं लाइव चलाए सोनू भैया, खाना आपका हुआ?
आपका खाना पीना हुआ सोनू भैया? ड्यूटी हो कि अभी आ गए रूम पे? जा रहा था चालू करने। आप चालू कर लो, बस 15 मिनट और चला के हम बंद कर देंगे, आप चालू कर लो। जय भीम जय भीम जय भीम। मुझे नींद नहीं आ रही थी, आपकी लाइव देखा चालू नहीं थी तब मैं बैठी थी, चालू कर लिया। नहीं तो मैं सो नहीं, अगर नींद आ गई होती तो सो गई होती। काम पर हूँ। अच्छा, छुट्टी कब होगी? छुट्टी कब होगी? 2 बजे? खाना पीना कुछ खाए कि नहीं अभी? हाँ। अच्छा। आकाश बिक्स पता कहाँ है? इसी सांस से जुकाम भी हो रहा है। खाया हूँ। अच्छा किए खाए, वो खाना पीना खा लेना चाहिए। हमारे तरह मत रहना लापरवाही। हम तो बहुत लापरवाही करते हैं। लाइक कर दिया हूँ। बहुत जय भीम भाभी जय भीम। जय भीम भाभी जय भीम। आपकी तबीयत अब कैसी है? ठीक है भाभी, पहले से ठीक है। आपने खाना खा लिया? हाँ खाना खा लिया भाभी। आप बताइए, आपका खाना पीना हुआ? दवा खाया कि नहीं? नहीं, दवा ववा सब खा लिया। दवा खाया नहीं, पता नहीं क्यों दवाई हार्ड है क्या, उसी से बेचैनी हो रही है, नींद नहीं आ रही है। तभी मैंने लाइव चालू कर लिया, जैसे तुम घबराहट सी हो रही थी, तभी बैठी हूँ, नींद नहीं आ रही है। आपका खाना पीना हुआ भाभी? आप फोन से दूर ही रहा करो। बिल्कुल सही बात है, आपकी बात सही है, क्योंकि डॉक्टर ने भी मना किया इस चीज़ के लिए कि कोई बात ज़्यादा माइंड पे लेनी नहीं है, सोचना नहीं है ज़्यादा। हमारा खाना पीना हो गया है। ओके भाभी जी। आप लोगों से थोड़ी सी बात हो जाती है, मन हल्का हो जाता है। जय भीम जय भीम जय भीम भाभी। आकाश, नींद नहीं आ रही है? सो जाओ।
लाइट बंद करना, बंद कर लो, सो जाओ। नाइस नाइस, थैंक यू भैया। सोनू भैया चालू करो लाइव अपनी, आप चालू कर लो। हमारी लाइव को छोड़ दो, मैं बस नींद नहीं आ रही थी वैसे चालू कर ली। वेलकम वेलकम, थैंक यू भाभी एंड भैया जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। सुपर सुपर सुपर, थैंक यू भाभी। थैंक यू सो मच। ऊपर वाली माउंटेन बन गया ना, याद नहीं आ रहा। ओके बाय, गुड नाइट डियर, गुड नाइट भैया, गुड नाइट भैया भाभी जी, बाय बाय। बाय बाय भैया भाभी जी, बाय बाय, गुड नाइट। आकाश अरे ये हाथ पकड़ खींचना, ये वाली उंगली टांस पकड़ रहा है। आकाश इधर आ जाना, ये वाला थोड़ा सा करना, ब्लड प्रेशर कम हो रहा है इसको, तभी ऐसा हो रहा है ये चीज़ें नशे। नीली पड़ रही है ना, तभी ये दर्द हो रहा काफी। ये देखना, इसके ऐसे करो, आराम आराम से जाओ, तेजी से नहीं। जब ब्लड प्रेशर कम होता है ना, तभी सुनने से हो जाता है, दर्द होता है तभी काफी। ऐसे करो, देखो, हल्के हाथ से, ज़्यादा टाइट मत करो।
क्या रखा है सोनू मामा ने पीछे? माइक्रोवेव लग रहा है, इतना बड़ा बक्से जैसा।